Cool. So first is basically what we're trying to do is animate a character with dialogue. Okay. To basically do the lip sync, then we'll sketch out what are the frames for the gesture, and then just animate with bones. Okay. Yes, sir. Second assignment is this kind of a character, make him do walk cycles. So before you do the walk cycle with bones, you have to do it in like normal draw करके जैसे होता है ना, the traditional way, frame by frame, and then get into bones. Okay, those are two assignments. Okay. And now, okay, this is the structure of the file. जो हमारा character होता है, right? This is a complete character, right? Now, yes, sir. when you double click on it, you go inside all the layers, right? So I'm going to show you all the layers, how it is right now. Let me just okay, this is the character default. Okay, now abhi iske andar it's a whole, it's like a symbol. At this layer, this is for the top layer, is for making him, suppose वो walk कर रहा है, you just animate and do right, the normal तुम्हारा जो tween होता है, ठीक है? This layer is for that. Yes, sir. So इसको भी delete कर रहा हूँ. Okay. Now हमारा पहले था ये वाला, this is the whole character, ठीक है? Now you go inside the whole character. Now here you see the different layers, ठीक है? Now this is one layer of the head, of the body, the hands and the head. ठीक है, 3 components है. How to rig it is a different issue, वो बाद में बताएं, ठीक है? And these are the different leg layers. Now you can rig it up all in one layer also, but उसके मतलब, I mean basically there is no one way of rigging a character. This is one way that I find convenient. Once you get used to it, you can figure out that I want to rig the hand separately, or you know, like I want to rig it separately because I find it easier to animate. So this is one basic way of rigging it. You can figure out your own ways also. Okay. Okay. Now, sir, तो सर आई वाज सेइंग कि ये जो रिग आपने किया है वो आपने हिप बोन से जो है शोल्डर के लिए कनेक्ट करें, ये नेक से नहीं होना था? समझ में नहीं आ रहा क्या नेक से नहीं होना था? जो सेंटर मतलब जो शोल्डर बोन्स हैं ये सेंटर में नीचे की तरफ है ना, तो इट शुड बी इन द सेंटर ना, बीच चेस्ट. हाँ, उसका एक रीजन है, दैट इज इनटू, मतलब वो अलग ही सीन. इनफैक्ट इफ यू सी बिलो द हिप देयर इज अनदर नोड which is the main parent node, which is basically actually bones में ना, if there is a way, मतलब if you select on a bone, you can see on the side rotation, translation, ये सब options देते हैं on the right side, ठीक है? So what happens is if you connect from the body, तो now wherever you make the pivot, वहां से body rotate होता है. If I want to connect the body from the neck, see body is just one layer, ये मैं body के अंदर आ गया, ठीक है? This is just a drawing. ये मतलब ये drawing layer है, ठीक है? So this is one. So मेरा hip और body is not separate. I can make that also कि मैं अलग hip और अलग neck और अलग hip कर सकता हूँ, but that becomes too many nodes. तो और मुश्किल होता है animate करने के लिए. So this is a very simple way to do it. Now if I connect it from here, then what will happen? The body will rotate from there. Now the body का rotation अब यहाँ से होगा. Right now, if I try to connect the body from here to the shoulder, तो body वहां से rotate होगा, which is wrong. Which is why we are forced to connect it like this. It's not मतलब the most logical way, but this is how it works. Okay. Now this is basic. Flash is just simple. ये कर दिया, animate हो गया. That's it. You know. Then अरे हाँ, see these are जब पूरा गायब हो गया ना, तो वो problems होता है इसके अंदर. So this is a basic flash. Now, basic how to animate over here. Second thing is इसमें ना कोई easy ease out नहीं होता, मतलब at least till now, ठीक है? So now for example, अगर मुझे ये हाथ यहाँ तक उठाना है, and the body goes like this, right? Now, this looks mechanical, right? So what I do is इसको यहाँ पे जाके
I just bring it back halka sa, right? Yes, sir. It has some this thing. Now another way, and before going this, I do anticipation. Before any movement, you have to do some anticipation, right? If I come over here, do for anticipation, right? So now if you see the faces and all are going crazy, मैं उस पे आता हूँ अभी. So this is your basic how to animate on bones, right? Now come to the leg layer. Same thing, whatever you can do, whatever gesture on the leg, right? So it's pretty flexible. ठीक है, ये की फ्रेम्स हो गए. सेम बाकी फंडा सेम है. ठीक है, okay. This is the basic animation over there. Okay, now next comes the hand gestures. ठीक है, if you click on the hand symbol and if you come on the side, you'll see इसके properties में there are these numbers, right? Now there are these things, right? This first icon is looping, this one is play once, ये है single frame. ठीक है, so this is the most important thing right now. Okay, now for example here if you see there's a number called 7. If I change that number, उसके अलग-अलग gestures आते हैं. Okay, now let me go inside the hand symbol. Double click किया hand की. These are the different shapes. ये हम सब पहले से draw करके library बना के रखते हैं, right? So now for example यहाँ पे this is not seeming natural. Either I can do this, I can change numbers from here. 1 type किया, फिर 2 type किया, फिर 3 type किया, right? Or I can click on frame picker. ठीक है? On the frame picker I can choose here. हाँ, ये वाला मुझे ठीक लग रहा है. Now for example if I have to do a change, कि suppose यहाँ से this guy raises his hands, right? ये हाथ ऐसे उठाता है, right? And यहाँ पे I want this shape, right? तो मेरा पहले ये shape था, when it goes here ये shape आ गया. Now this is wrong because ये हाथ उल्टा होना चाहिए. Just remember one thing, in bones you can't flip on the bones. वो पूरा उसका वो सारी frame से flip हो जाएगा, right? So over here, okay, if I want the other way of the hand, what I have to do is go inside. ये shape है मेरा, right? And make a copy of that. ठीक है? And यहाँ पे मैं उसको flip कर लेता हूँ और and I make sure that my placement is the same. Onion skin on करके कि हाथ का यहाँ पे आपका वो हो रहा है, base आ रहा है. So this hand has to be like this, correct? ताकि when you do it उसी जगह पे हाथ आना चाहिए. सर हमने इसका पिवट सेट नहीं किया वहाँ पे. पिवट, हाँ पिवट बाहर सेट होता है इसके. दिस इज राइट नाउ इज जस्ट अ ड्राइंग. सो ड्राइंग में क्या होता है, व्हाटएवर यू चूज वो सेंटर दिखाता है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, नाउ विद इन दिस आल्सो इफ यू सी लेयर अलग है और ये अलग है, राइट? वो कोई रूल नहीं है, मतलब डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ड्राइंग स्टाइल यू कैन हैव इन वन लेयर आल्सो. बट इस पे क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, एक हैंड सिंबल है और हमको बहुत अलग-अलग कैरेक्टर्स के लिए बनाने होते हैं. Now let's say I've made a girl character and I use the same symbol. मुझे skin color उसका change करना. So why I put in separate layer is I select this and go to this multiple select. ठीक है? ये select कर लिया, Control A दबाया, ये सारे select हो गए. Then I suppose make the hand this color, right? So सारे हाथ pink हो गए. Now the इसको lock किया, जो ऊपर वाला layer है, it has to be a darker color of pink. It can't be brown now. So again I select this layer. Select this, Control E दबाया, सारे select हो गए, right? Come over here and I get a जो हमारा pink, human pink थोड़ा सा लेके, I don't know, maybe this is the darker color. I switch it off, right? So ये हो जाता है, right? So that's why I have them different layer, because अगर एक layer में होगा ना, ये outline भी गायब हो जाएगा, it become the same color as this. Right, which is why I have used different layers. I'm going to undo this. Okay, so this is how your basic animation works. ये अब यहाँ पे मेरा हाथ मेरे लास्ट में जो सिंबल है उसमें कर दी, right? So इधर आ गया. Okay. Now again I just bring it back थोड़ा सा.
sorry, for moving the joint if it is V and move it. अच्छा, यहाँ पे मैंने इधर ना एक एंकर में एक रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, which I'm going to remove right now because I don't want the restriction in this animation. So इधर गया, right? Now once I come over here, then I can do. So इसमें animation once you get used to it ना, बहुत fast होता है. मतलब it's the fastest tool of animation. वो wave कर रहा है, that's it, तुम्हारा हो गया animation, right? So now for example यहाँ पे आके ये मेरा पहला gesture हो गया. I give it a hold for 10 frames. Now I want a different gesture. One second, somebody's calling me. Okay. Okay. So, ठीक है, anyway, you'll get into animation बाद में, but this is the basic way to do it. ठीक है? Okay. Now let me explain to you. फिर बस जैसे हमें की फ्रेम डाल के उसके ऊपर जॉइंट्स को मूव करना है. की फ्रेम भी नहीं डालना, की फ्रेम भी नहीं डालना. You come anywhere. हाँ, मतलब अपने आप ऑटो की फ्रेम आ जाएगा. That's it. ठीक है? That's it. Now ये हो गया हमारा basic how to animate. Okay. Now this one you learned about single. If you see ये जो हम टाइप करके जाते हैं ना इस फ्रेम में 1 2, right? This is if you see the mode over here, this mode is called single frame. ठीक है? In which I have assigned particular frame for this. Okay. Now जो mouth का animation होता है और eyes का animation है वो थोड़ा अलग होता है. Okay, like for example this frame that I have, this head is also a symbol, but if you see the looping here, it is not on single frame, it is on loop. Okay, उसका reason है, go inside, इसको I'm going to put single frame, mouth को I'm going to put single frame. Okay, single frame उसको loop का बताता हूँ. Now this is what happens is, let's say अब मैंने उसको रोक दिया, वो अभी पागल जैसे भाग रहा था आगे ना expression, so I've stopped that expression now. Now for example in this frame I want a blink, right? So I should ideally name these layers. ये टोपी layer है, ये mask, mouth, this is eyes, okay, ये head, whatever, head shape layer, right? Okay. So now I want a blink at this point, right? मैंने F6 दबाया है, I click on it, I go to frame picker, बंद किया, then I copy this frame again, right? Alt दबा के I get this frame over here, blink हो गया, right? तो आपने फास्ट के एक बार स्लो करेंगे. अच्छा, मैं एक फिर से करता हूं. Okay. So I come to this frame, 20th frame मुझे blink चाहिए, ठीक है? So I put F6 on it, then I click on it, ठीक है? तो I go to, either I can keep on searching यार blink expression कौन सा था, 2 था, 3 था, 4 था, you know, either. और अभी क्या होता है एनिमेट करते हैं तो आदत हो जाती है, you don't have to go to frame picker, वो याद हो जाता है. See, these are the different expressions inside the eyes. जैसे हाथ के है ना, similarly eyes के सारे expressions बनाए, right? So whatever expression I need, so for example ऐसा करते हैं कि वो blink करता है and opens his eyes wide. तो मैंने इस frame में I go to frame picker, हाँ ऐसे blink करता है वो, और फिर यहाँ आके his eyes go like really wide, ठीक है? तो ऐसे खुल गया, ये चेंज हो गया. Okay, now इसमें जो फ्रेम नंबर है ना, this is frame number 20 and this is frame number 24, ठीक है? तो when I'm outside, हमारा exactly 20 और 24 में वो अपने आप चेंज, there's no key frames here, यहाँ पे की फ्रेम नहीं दिखेंगे क्योंकि उसकी सिंबल के अंदर एनिमेशन हो रहा है. नाउ अगर मैंने ये वाला जो सिंबल है, अगर मैंने गलती से उसको 1 पे कर दिया ना, वंस पे सिंगल फ्रेम में, तो अंदर का नहीं दिखाएगा मुझे कुछ. इज ओनली गोइंग टू शो मी द फर्स्ट फ्रेम, राइट? सो टू मेक श्योर आई गेट टू सी द इनसाइड वाला एनिमेशन, आई क्लिक ऑन इट एंड आई डू लूप, सो इट शोज द इनसाइड वाला एनिमेशन. ओके, सो इसका रूल ऑफ थंब इज, so what we are discussing right now, we are discussing symbol, ठीक है? Symbol, looping, ठीक है? Loop, play one, single frame. Okay.
नाउ सिंगल फ्रेम तुम्हारा हो गया फॉर this thing for the hands, right? Use it for the hands and the lips and the eye shapes. ठीक है. Loop you use for the overall head symbol. ठीक है. सिंपल, ये शुरू में थोड़ा वो होता है यार, सिंगल फ्रेम की लूप रखो. द सिंपल रूल ऑफ थंब इज, अगर किसी लेयर के अंदर जाके, let's say any layer, I go inside that layer and there are these multiple frames, तो बाहर का नेबर उसको सिंगल फ्रेम पे होना पड़ेगा, because I need to call those frames as in, इसके अंदर भी वो है. So when I come outside, I click on the hand layer, it's a single frame. ठीक है. This is what the thing. Okay. That's the basic thing. So this is your now you know basically how to animate. What you have to do is don't start with simple gestures. Ki, for example, he takes a blink and he waves. You know, do some basic animation. You'll get a sense. ठीक है. अच्छा, now this character में fine. So this character, if you see, इसमें mask के अंदर कोई lip shape की जरूरत नहीं है. So it's just a loop. So what I do is, let's say there is some audio, and after this frame, he has to start talking. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ये select, the way it's been rigged is, I select this and I press loop, right? ये आता है ना, selected what mask, select the mask layer, loop. तो इसके पहले किसी mask पे कोई animation नहीं हो रहा, right? Static, right? Yes sir. Now यहाँ पे if you see, it starts talking, right? Then suppose का इतना ही उसने बात करा है. अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ यहीं पे करना है आपको, बस इतना बात करता है वो, right? Stop over here, again press single frame. तो रुक जाएगा उसके अंदर. Now अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये बहुत फास्ट भाग रहा है, ये मास्क वाला. This talking is too fast. So what I can do is I can go inside and press, put some in, ऐसे थोड़ा space out कर दिया उसको. So it looks, हाँ, right? So he's talking like that, right? So this is how you do with the, how you work with expressions. Okay, let's say after this he talks, then let's say he looks the other way. पहले उसने बात किया, then again see every expression change में you have to put a blink. Blink. Now, sorry, मुझे करना है कि यार this character now at this point has to look other side. ठीक है. And what we do is, in this limited animation what we do, right? Limited animation में we don't make front view किसी भी character का. We always make in 3/4 view. उसमें क्या होता है कि at this point I can go to modify, transform, flip horizontal. हाँ, horizontal, yes. ठीक है. But ये थोड़ा ज़्यादा हो गया. I have to make sure it's now it turns this way, right? So when you come out, पूरा हेड की सारी सिंबल्स, मतलब सारी लेयर्स सेलेक्ट करके आप अंदर जाके लेयर्स में, ये बाहर नहीं करना है. बाहर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. On the bone layer you can't flip, you can't do any scaling or any effect. You can, but वो rigging पूरा जाएगा उसमें. So ये करना है तो अंदर करना है. बाहर what I can do is, now for example अभी ये ऐसे है, बहुत मैकेनिकल लग रहा है इसका टर्निंग, right? So इस पॉइंट में हो रहा है टर्निंग. What I do is, तो I'll make a give him an antic. ये है मेरा F6. मैंने यहाँ पे की फ्रेम सेट कर दिया. Then I come to this frame when he's blinking. Okay, now here is interesting. Okay, इस bones को I can select the whole layer and move it थोड़ा नीचे, right? And वो अपने आप motion pin हो जाता है. ठीक है. Suppose I do this and I am going to do this. Right? And जब वो इधर खुलता है, I'm going to raise it back to a similar level. ये हाथ भी उल्टा है actually. I have to make it the other way around, अंदर जाके, right? So this is a take, right? And if I want it to be more
फाइन ट्यून द एनिमेशन, व्हाट आई डू इज इसको मैं थोड़ा आई प्रेस so right this hand is wrong, वो मैं अंदर जाके मुझे शेप करने पड़ेंगे, but this is called a take. मतलब अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ, I look the other side, this is like a default thing, नीचे जाता है एक फ्रेम, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है, okay, so that is the second kind of animation. Okay, one more thing I'll teach you इसके अंदर is there are two kinds of, ये मैं उड़ा रहा हूँ, I'm just removing this frame, okay. Okay, now let's say this is your basic character. There are two ways of animating in the bones. One is you press V, जो ये वाला tool होता है ना, arrow वाला tool, इसका shortcut is V. You press V, and if you press V and then you click on this layer, तुम्हारा bone से animate होगा, ठीक है, which is according to armature. But sometimes what happens is हमको थोड़ा extra bounce देना होता है, like stretch and squash, what you did ना on your exercise. तो अभी एक्स्ट्रा बाउंस देना वो कैसे देंगे उसके अंदर, फॉर एग्जांपल जो हेड है, सो व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट इज यू हैव टू प्रेस क्यू, कोई भी लेयर लिया उसको मैंने प्रेस कर दिया क्यू, क्यू से क्या होता है, यू सी अ गिम्बल व्हिच कम्स ऑल अराउंड इट, नाउ आई कैन स्केलिंग, हाँ स्केलिंग वाला, स्केल नहीं करेंगे, मूव कर, फॉर एग्जांपल ये है, सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाथ लेके ऐसे शिफ्ट कर दिया, so you can animate individual parts of it, वो ऐसे भी एनिमेट कर सकते हैं. Now you'll say यार इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्यों करूंगी ऐसे में इसका, राइट, बट इसका पॉइंट, इसका हेल्प कहाँ आता है, इन टू प्लेसेस व्हेन यू आर अगेन डूइंग अ एंटी, लेट्स से ये है हमने अभी जो किया था, to move the whole body down, if you press V and try to move it down, नहीं होगा, V में it only animates on the existing ring, ठीक है, V से you can only animate the ring. Now if I want this whole body to go down, I select this, I press Q and I press it नीचे, right, so ये हो जाता है. और फॉर एग्जांपल मुझे जो हेड है उसको और नीचे करना है, मैंने दबाया Q, ऐसे कर दिया, राइट, तो you get this subtlety in the animation, ठीक है. So any part you select, अगर तुम्हारा Q pressed है, you can actually, मतलब this is the flexibility basically. वो suppose मेरे shoulders हैं, let's see, मैंने ये पूरा हाथ सिलेक्ट किया और ये पूरा हाथ सिलेक्ट किया, फिर Q दबाया, ये गिम्बल आ गया, राइट, so in this frame मैंने इसको और ऊपर कर दिया ऐसे, राइट, राइट, तो ये तो शुरू से ही हो गया, नहीं एक्चुअली बॉडी नीचे गया लेकिन वो के लिए लग रहा है कि मूवमेंट है, हाँ आई मूव द बॉडी नीचे ना और हाथ को ऊपर कर दिया, सो इट्स लुकिंग लाइक देयर इज नो मूवमेंट. एनीवे, okay, this is the second thing. Okay, so let me just recap this. One way to animate is your sorry, one way is V press करके. Second is you select something and do Q for some gestures, for some more this thing. Third, what we learned is अंदर जाके how to change the faces, right? Expressions animate किया. Fourth is we learned this hand वाला, see अभी Q दबाया ना, उसके लिए मैं move कर रहा हूँ, हाथ हिल जा रहा है, so it's a mistake, right? So that's a big problem. So what I have to do is I have to press V and then when I move it, ये bones के according move करेगा. So when you start doing it ना, तब you'll get the hang of it. ठीक है, कब Q कब वो use करना है. Okay. Basic this thing is done. Okay, another thing I'll show you is your, बहुत बार क्या होता है, for example I have to overlap parts of the body. Let's say my hand is over here और मुझको ऐसे एनिमेट करना है कि हाथ इसके पीछे जाने से, right? Suppose it's got a hand behind. Very simple. Just select on this bone and press Control and down arrow. तो वो जो layers है ना, वो पीछे भेज देता हूँ, ठीक है. If you select it again, बाहर निकल के आएगा, बोलिए हाथ को सिलेक्ट किया, so if I do Control plus arrow, it comes on top. For example, अभी हेड यहाँ पे, ठीक है, head is above the body right now,
So select the head, do control down arrow, पीछे चलेगा head. So all this kind of thing comes in handy when, let's say, like he's holding a water bottle. जैसे उस हमारे उस वाले film के अंदर water bottle पकड़ा हुआ था, right? So if I make a water bottle, I have to make sure it's above the body layer but below the hand layer. ठीक है? So this is actually part of rigging, but it's a simple, मतलब you should know this for basic animation also. ठीक है? Okay. Now, ठीक है, this is done. अच्छा, ये हाथ तो मुझे उल्टा करना है ठाकुर. So I come over here. Again, I drag it here. Make sure. And I select this for the entry. Oh, with your credit card. Oh, fantastic. Okay. So let's see our assignments. Okay. Lip sync may we have not started, so let's get on to lip sync. Okay. Do one thing, open the other character. ये गर्ल वाला कैरेक्टर ओपन करो उसके अंदर में फ्लैश में. ओपन है. ओपन है. So क्योंकि बॉय वाले में मास्क था, उसमें लिप सिंक नहीं कर सकते, राइट? So let me just open this girl वाला लेयर. और इसके अंदर डायलॉग भी है, वेरी गुड. बस ठीक है, let's say if you animate this. ठीक है. So now in our normal animation का जो process है ना, okay, it always starts from this part. Always starts ulta. It first is this, right? And then you animate the hands and body. Then you animate the bone. Sorry, this is the same thing. Then you animate the whole character. So you don't start your animation from, let's say, this layers. यहाँ से animation शुरू नहीं होता. You have to start the animation from the dialogue. Dialogue is the main thing which defines the timing. ठीक है? So abhi I won't start animating Savdhan. I won't start doing these gestures. What I'll first do is I'll first go inside the head layer. Right? Let me see. Okay, isme I think I've done some animation already. I don't think I need those layers. Okay. इसमें sound गायब है, so I go up, take this layer, right click करो इस पे, copy layers, then go inside the head layer again, यहाँ पे करो paste layers, right? So you get. So now, have you done lip sync earlier? उससे पहले किया था, बट वो एक और वो आता है ना ऐप, उससे किया था. लिप का कुछ आता है. हाँ, तो ऐप तो इसमें भी है, we can do it, but first you need to figure out how to do manual lip sync, because वो ऐप से perfect नहीं होता. ठीक है? So we have to first do manual lip sync and then get onto the app वाला thing. Okay. So I just do Savdhan, sir, right? So I click on this. Let me go to frame picker. Now it's a happy expression, right? So अगर ये sad होता तो ये expression होता, right? और ये expression होता सावधान के लिए, but it's a happy सारे expression. expressions बनाए आपने? हाँ. ये अलग से, हाँ सारे बनाए. ये सारे, हाँ, ये I made all the expressions. So these are the default expression you use होते हैं. A, E, I, O, U, then L बोलने के लिए, F बोलने के लिए, this is a normal guide, and then same expressions, same shapes, तुम्हारा जो basically vowel होता है, right? The same shapes, उनके sad versions, because I can see the same dialogue happily or sadly, right? तो इसका एक dialogue guide होता है, you can just Google shape expressions क्या है, right?
So सावधान. Okay, so यहाँ पे definitely आएगा, right? सावधान. Okay, now basically the trick is not to animate each and every shape. वो बहुत fast movement होता है, right? साव. If you actually see yourself speaking, so सावधान. The trick is to know how much to animate. अभी n चाहिए, n. This is l or n is the same sound, right? And so अभी धान धीरे से आ रहा है, right? So you get the thing over here, right? Yes sir. इसमें सिंगल फ्रेम रहेगा ना? हाँ, ये तो सारे सिंगल फ्रेम है, right? You got it. But बाहर जब जाएगा, this will be loop. ठीक है? Okay. Okay, so now the way to do the ये मेरा animation हो गया. Okay, let's say we are only doing this much as a demo. So how now I have not drawn the actual shapes, but the way to do it is कि you have to first figure out what your gesture is. Because अगर हम bones लेके we start animating directly ना, it's very difficult. So the way to do is, at least when I used to start off animation, I used to switch off these layers. ठीक है? अच्छा, सावधान she's saying. क्या gesture है सावधान के लिए? The main gesture, this is main part of acting. Let's say सावधान में she is showing one finger and she's bending forward, right? Suppose ये है तुम्हारा very rough, just thumbnail में, right? So abhi this is your basic thing. So now before I go to this posture, it can start off in a, she starts off the thing in a normal posture, let's say. She's like this and she goes, right? So ye do honge, right? So you now from here to there you can't go directly. So in the beginning what you need to do is you have to make the breakdown also. ठीक है, ये मेरा first frame, ठीक है? Whatever, and from there now before going to this frame you need to put a antic. Before I start going there, I'm deleting this frame. F7 किया, मैं पहला frame देखता हूँ, ये frame देखता हूँ. So before I do that, I can go. You know what antic is, right? Anticipation. It's a short for anticipation. ठीक है? तो I make her go back. This is the basics of animation. जो तुमने अभी 12 principles सीखे ना, वो यहाँ पे आता है फिर. ठीक है? कि ये सावधान, right? Now इधर भी what I can do is when I'm animating कि चलो she has to go down a little bit more and then bounce up. वो फिर वो life आएगा, stretch and squash वाला फंडा आएगा. So I'm using two rules over here. One is your नीचे करके, right? So you see, let's see. Or this is like very rough, right? But जो basic emotion है ना इसका, the basic acting you need to do at least at this level when you're learning animation, right? ठीक है, like this. Then ये इसको मैं guide बना लेता हूँ, ठीक है? And then I start with this. Okay. So guide में तो दिख नहीं रहा है because of the outline color. You can change the outline color too. If you double click on this layer,
ये ऑप्शंस आते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू चेंज द आउटलाइन टू व्हाइट. ओके ओके, भाई कर तो दिया मैंने व्हाइट. हाँ ओके. For some reason it's not letting me change the show me black. ठीक है यार, black भी चलेगा. Okay. So now my first position is okay. Girl का अलग rigging है, right? Because she's got a skirt, right? तो skirt last पे करते हैं. पहले just do the basic pose. Let's say one hand is like that and the other hand. हमारा क्या था उसके hand? हमारे both hands at our waist, right? तो ये किया and ये number क्या है? What is? I need the same number on the other side. 18 है. Let me put 18 over here. Right? Okay. Now ये मैंने ऐसे कर दिया. Right? Suppose this is my first frame. Correct? ठीक है. I'm not going to the leg का animation में बाद में करेंगे. I'll explain the leg layer later. ठीक है. So now you go little bit पीछे. And this hand comes out. Maybe this hand opens up. You can also do one thing. यहाँ पे try करके ना you can see different shapes. यार कौन सा natural लग रहा है? हाँ. हैंड वाला जो है ये आप बाहर से कर रहे हैं, मतलब अंदर सिंबल में जाके नहीं? नहीं, क्योंकि मेरा ये फ्रेम पिकर है क्या ना. अगर फ्रेम पिकर पहले नहीं था पुराने फ्लैश में ना, so you select on the symbol, you come to frame picker, click on that. But this hand वाली layer was inside this armature वाला ना, first armature में. हाँ बाहर ही है, अंदर. I don't have to go inside. यहाँ पे सारे शेप मुझे एनिमेशन करने के लिए, वो तो मेरा लाइब्रेरी जो अंदर होता है वो लाइब्रेरी है, राइट? इवन जब हेड का करते हैं, जब हेड का एनिमेशन कर रहे थे, राइट, वी वर नॉट गोइंग टू दिस लेवल. ये तो लाइब्रेरी लेयर. आई एम जस्ट कॉलिंग व्हिच शेप आई नीड ओवर हियर. ठीक है. तो सिमिलरली सपोज ये मेरा फर्स्ट फ्रेम, आई थिंक इट वाज दिस वन. मैंने ये किया और यहाँ पे if you see this, my hand is already got that one number वाला जो लिया है. Sorry. Right, so I raise the hand according to this and I look for that one. I think this one, right? ये आ गया ये, right? And then Based on my recording, because it's 5 minutes, right? okay. हाँ. But I'm at 2. Right. So it reaches here. तो मैंने ऐसे किया, stretch it out, right? ठीक है. ये pose आ गया and I put F6 over here, the same pose as this, but अब ये नीचे की तरफ ज्यादा हो गया. So I make it like this. तो basic animation is done. Now you do the details. कि यहाँ पे ना body नीचे जाएगा. I press Q. I select the whole layer. Press Q. The whole body नीचे. Maybe give it a tilt. The light डालने के लिए, and I make sure. Right? Yes, sir. इतना हो गया. उसके बाद लास्ट में we have to do the hair का animation. This is the secondary animation. वो थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ना तो लाइफ आ जाएगा उसके अंदर. ऐसे किया, this is over here. Then hair बाद में settle होता है, right? तुम्हारा जब pose हो गया, that's why it's called secondary animation, secondary action, right? Follow through भी ना सर? हाँ, ये follow through हो गया, right? सर दोनों में कोई difference नहीं है ना? Difference है secondary action and follow through is जो चीज secondary action होता है उसी का follow through होता है. But secondary action is my head goes back and so my hair comes ऐसे. ये मेरा secondary action हो गया. But follow through is जब मेरा अटक जाता है यहाँ पे, जब रुक जाता है main animation, ये चलता रहता है, right? So that's called follow through. So इसमें बहुत The problem with this is इसमें बहुत
when there are too many keys ना, कोई बोलेगा changes करो इसके अंदर, changes करना बहुत difficult है इसके अंदर in Flash because there are too many keyframes, right? If you remove this keyframe, तो बहुत soft हो जाएगा. It's in fact faster to do it again, पूरा animation. So the secondary animation you do after your animation is approved. Let's say you've done a basic animation, you send it to me. Once I say हाँ ठीक है your animation approved है, then you go to the hair वाला animation. Because अभी hair को करने के लिए ना मैं बहुत सारी keyframe डाल दूंगा इसके अंदर. Then it becomes very difficult to change. Now if I say यार change the symbol of this, ये जो सावधान वाला जो shape है, मुझे ये shape नहीं चाहिए, मुझको ये shape चाहिए, ये shape चाहिए, ठीक है? This also works, but अभी मैंने इतनी keyframe डाली है कि मुझे सब में जाके वो shape करना पड़ेगा, ऐसे करके घुमाना पड़ेगा, right? That's too much. So you get your animation approved at this level, ठीक है? अगर ये approve हो गया, then you go to make more keyframes and start doing these things, right? Yes, sir. Okay. So first, what I want to do is in your file only, I want you to animate maybe Savdhan and okay, Savdhan sheetwear jari hai, which is 110 frames. So come to 110 frame, select these layers and keep on doing Shift F5. सारा delete कर दो, ठीक है? This is your first assignment, right? ठीक है, इतना ही करना. हमेशा पहले लिप्स से और आईज से स्टार्ट करना. हमेशा, ठीक है. First go inside. अब अभी मैंने आईज का किया ही नहीं इसके अंदर. In fact, this girl has beautiful eyes. ये देखो इसकी बहुत सॉफ्ट आईज है. Look at this, कितने उसके नॉर्मली एकदम सॉफ्ट ब्लिंक है इसका. You know? Yeah, 2 minutes. ठीक है. Yes, sir. So anyway, I'm stopping this. ठीक है, and I'll just call you in 2 minutes. ठीक है, चलो, all right.